जो अपनी इसमें टारगेट था साउंड ऑफ कोलाची में कि सिर्फ गाने नहीं बनाने थे, सिर्फ म्यूज़िक नहीं बनाना था, कुछ नई फॉर्म्स इवॉल्व हों, जो म्यूज़िकल फॉर्म्स बाहर की यूज़ की हमने इसमें रॉक म्यूज़िक यूज़ किया है, जैज़ म्यूज़िक यूज़ किया है, फ्यूजन म्यूज़िक को जैज़ फ्यूजन म्यूज़िक को हमने यूज़ किया है, फोक म्यूज़िक यूज़ किया है, अटोनल म्यूज़िक यूज़ किया है, वेस्टर्न क्लासिकल यूज़ किया है। ये सारी म्यूज़िकल फॉर्म्स को सबकॉन्टिनेंटल म्यूज़िक के पैरामीटर्स के अंदर हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि दोनों लैंग्वेजेस जब मिलेंगी तो क्या होगा। The collaboration of sound is a pretty amazing process, and I hope that this is something that that the audience can really appreciate, because it's a fusion, as we all know, of traditional Pakistani music with American rock and jazz. मेरा म्यूज़िक का टारगेट भी यही है कि मैं सितार बजाऊं, बट उसे क्लासिकल वे के साथ, जो आजकल जिस किस्म का जॉनरा लोग सुनते हैं, मैं उसके साथ भी इसको मर्ज करके और लोगों में पेश करूं, और लोग उसे हर वे से सुनना पसंद करें कि ये फ्यूज में कैसे बजता है, जैज़ म्यूज़िक में कैसे बजता है, और इसको रॉक में कैसे बजता है। हम भी एज लाइक अभी स्टूडेंट्स ही हैं, बट कोशिश करते हैं कि अच्छा हो और इससे लोग कनेक्ट हों। ये हमारा एक पर्पस है म्यूज़िक करने का। म्यूजिशियंस का और आर्टिस्ट का ये मेरे ख्याल से लेवल होना चाहिए कोलैबोरेशन के वक्त कि हाँ, वी आर हियर फॉर अ पर्पस, और वो म्यूज़िक बजाने जमा हुए और वो वाइब्स जो बनी थी, मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला ये Na
ये बोल रहा था ना कि यार मैं छोड़ के भाग जाऊँ क्या मुल्क, सही है तालिबान है सब कुछ है हंगामे, लेकिन भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, मेरा मुल्क है भाई, तो रहेंगे यहाँ, करेंगे जो भी है, इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने मफाद के लिए अपनी फ्यूचर जनरेशन्स का मुस्तकबिल थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं, वी हैव टू डू समथिंग, खतरनाक टाइम है बड़ा। I just want to say 2 words. This was Sounds of Kolachi. लेकिन अब ऐसा म्यूजिक बजेगा कि बस बजेगा। ट्रस्ट मी, अब ऐसा म्यूजिक बजेगा कि बजेगा और बजता रहेगा।